हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे MCQs फ्रॉम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। दिस टॉपिक इज यूनिट 3 ऑफ UGC NET Commerce syllabus। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UGC NET Commerce, दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, बाय अटेम्प्टिंग दिस क्विज यू कैन टेस्ट योर नॉलेज। सो पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज। ऑप्शंस आर पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इक्वल टू वेरिएंस। करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, दैट इज जीरो। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी आप सम ऑफ डेविएशंस यूज करते हैं विच इज टेकन फ्रॉम मीन, उसका आंसर हमेशा जीरो होता है, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस कैंसल ईच अदर। राइट, सो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which measure of central tendency is most affected by extreme values? Options हमारे पास हैं mean, median, mode और geometric mean. Correct answer यहाँ पर होगा option A, that is mean। और ऐसा क्यों है? क्योंकि we all know जब भी हम mean calculate करते हैं, it includes all the values in the data। जितने भी values होते हैं सभी को वो consider करता है। That is why it is most affected by the extreme values। अगला क्वेश्चन, इफ मीन इज 50 एंड मोड इज 40। मीन इज, आपको मीन यहां पर कैलकुलेट करना है, आपको गिवन है मीडियन 50 एंड मोड इज 40। ऑप्शंस हमारे पास हैं 45, 55, 60 एंड 53। करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 55। यहां पर हमने पियर्सन्स रिलेशन यूज किया है विच इज मीन माइनस मोड is equal to, mean minus mode is equal to 3 in bracket mean minus median। right, short form I'm writing here, mean minus median आ जाएगा ब्रैकेट में। अब इसके बाद अगर आप सॉल्व करते हैं putting all the values here, mean आपको कैलकुलेट करना है, सो से हम अगर x एज्यूम करते हैं, माइनस मोड is 40 is equal to 3 we have here। अगेन आपके पास ब्रैकेट में है मीन जो हमें कैलकुलेट करना है, माइनस मीडियन इज 50। नाउ इफ यू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन यू विल गेट द आंसर एज 55। द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज, ऑप्शंस हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और क्वार्टाइल डेविएशन। करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन इज। ऑप्शंस हमारे पास हैं मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रेंज। करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन बी, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। और ऐसा क्यों है? बिकॉज क्वार्टाइल डेविएशन यूजेस मिडिल 50% ऑफ द डेटा, सो दैट इज व्हाई इट इज अनअफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स, हेंस इट इज बेस्ट फॉर स्क्यूड डेटा। सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। अगले कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे फ्रॉम द टॉपिक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सो 6th क्वेश्चन हमारे पास है, इफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0 इट मींस नो रिलेशन, परफेक्ट रिलेशन, स्ट्रॉन्ग रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन। करेक्ट आंसर यहां पर है नो रिलेशन। अगर कोएफिशिएंट कोरिलेशन 0 है, इसका मतलब क्या है? वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन, ऑप्शंस हमारे पास हैं 0 to 1, -1 to +1, 0 to -1 or none of the above। Correct answer is option B, that is -1 and +1। That means value of correlation goes between -1 and +1। -1 से लेकर +1 तक की वैल्यू हो सकती है correlation की, और अगर वैल्यू -1 है that means it gives you perfect negative relationship। अगर वैल्यू +1 है that means it gives you perfect positive relationship। In regression analysis, the independent variable is also called, options हैं predictor, criteria, response और dependent। Correct answer है option A, that is predictor। और ऐसा क्यों है? Because independent variable helps in predicting the dependent variable, that is why it is also known as the predictor। Coefficient of determination is square of, options हमारे पास हैं regression coefficient, correlation coefficient, variation और standard deviation। Correct answer is option B, that is coefficient, correlation coefficient।
If x and y are perfectly negatively correlated, then regression line will be, options हैं parallel to x axis, मतलब कि like this, ये हो जाता है parallel to x axis, parallel to y axis, have negative slope, मतलब कि इस तरीके से, this is the negative slope, pass through origin only. तो इनमें से क्या होगा slope regression line का if x and y are perfectly negative? करेक्ट आंसर यहां पर है ऑप्शन सी, दैट इज दे विल हैव अ नेगेटिव स्लोप. अभी वी विल हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. पहला क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 11 इन द कंप्लीट सीरीज एंड फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी. क्वेश्चन है, इन अ फेयर कॉइन टॉस, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज, ऑप्शंस हैं 0, 0.25, 0.5 और 1. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 0.5. और ऐसा क्यों है? क्योंकि फेवरेबल आउटकम डिवाइडिंग इट बाय टोटल आउटकम्स, राइट. सो फेवरेबल आउटकम्स, अगर आप टॉस करते हैं किसी कॉइन को, फेवरेबल आउटकम मतलब कि हेड आने का जो पॉसिबिलिटी है, दैट इज लेट्स से 1, टोटल आउटकम्स 2. सो दैट मीन्स हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, दैट बिकम्स 0.5. The sum of possibilities of all possible outcomes is always, options हैं 0, 1, depends on sample size और infinity. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 1. और ऐसा क्यों है? अगर हमने पिछले वाला क्वेश्चन जो डिस्कस किया उसी को लेकर चलते हैं, तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी थी, दैट वाज 0.5. I'll just erase it. Just give me a second. ओके, तो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी थी 0.5. सिमिलरली टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 0.5. दैट मीन्स द सम ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज हेड एंड टेल, इन दिस पर्टिकुलर केस इज 1. Similarly, in all the cases, sum of possibilities of all possible outcomes will always be 1. In binomial distribution, mean is given by, options are NP, n in bracket 1 minus p, np in bracket 1 minus p, under root npq. Correct answer is option A, that is np. Poisson distribution is a limiting case of, options are normal distribution, binomial distribution, chi-square distribution or uniform distribution. Correct answer is option B, that is binomial distribution. Normal distribution is also called, options हैं skewed distribution, Gaussian distribution, binomial distribution or Poisson distribution. Correct answer is option B, that is Gaussian distribution, because it has been named after Carl Gauss. Now some questions from hypothesis testing. Null hypothesis is denoted by, options हैं यहाँ पर A, B, C and D आपको given है. So null hypothesis is denoted by option B, that is HO, H0, HO आप इसे बोल सकते हैं. This is how null hypothesis is denoted. थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट में आपका यहाँ पर 0 लिखा होता है. Type 1 error occurs when, options हैं true null hypothesis is rejected, false null hypothesis is rejected, false null hypothesis is accepted, alternative hypothesis is accepted correctly. So correct answer यहाँ पर है type 1 error कौन सा होता है? When true null hypothesis is rejected, that means option A. P value less than 0.05 indicates, options है null hypothesis is accepted, option B null hypothesis is rejected, option C test is invalid, ऑप्शन डी डेटा इनसफिशिएंट. सो जब आपका p वैल्यू 0.05 से कम होता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी null hypothesis is rejected. This is what is indicated when p value is less than 0.05. One-tailed test is used when, options are direction of relationship is known, no direction is known, two samples are equal, or option D variance is same. So one-tailed test कब यूज किया जाता है? When the direction of relationship is known. That means option A. Chi-square test is used for testing difference of means, variance equality, association between attributes or time series data. Correct answer is option C, that is association between attributes.
पॉपुलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग सैम्पलिंग एंड रिसर्च डिजाइन. सो ऑप्शंस हमारे पास हैं इस क्वेश्चन के लिए यूनिवर्स, सैंपल, स्टैटिस्टिक और पैरामीटर. सो पॉपुलेशन इज ऑल्सो नोन एज universe in sampling, which means the whole group under study. It will include every unit under study. This is known as universe. A part of population is called, options हैं parameter, sample, frame or variable. Correct answer is option B, that is sample. It is a part of population which is taken to represent the whole population, because बहुत बार ये possible नहीं होता है considering money and time factors कि पूरा universe study किया जाए, every unit is studied. So उस time पर क्या किया जाता है, a part of population is taken as sample and it is considered as representing the entire population. When each element has equal chance of being selected, it is, अगर हर unit of the universe has equal chance of being selected as a sample, so उसका मतलब कौन सी sampling की हम बात कर रहे हैं, stratified sampling, random sampling, quota sampling और judgment sampling. Correct answer is option B, that is random sampling, क्योंकि random sampling में every unit has equal chance of being selected as a sample of the entire population that we call as universe in sampling. Snowball sampling is mostly used in marketing research, social research, production study or inventory study. Correct answer is option B, that is social research. So social research basically use की जाती है for hidden or difficult populations. For example, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं let's say migrants की, हम बात कर रहे हैं drug addicts की, तो वहाँ पर snowball sampling is used. Sampling error arises due to, options are biasness, wrong questionnaire, studying part instead of whole or non-response. Correct answer is option C, that is studying part instead of whole. Now we have questions from research design. Research design is a blueprint of research, statistical test, hypothesis or data. So research design क्या होता है? It is basically a blueprint of research. That means option A would be the correct answer here. The first step in research process is, options are data collection, problem identification, hypothesis testing or literature review. So research process में पहला step हमेशा होता है option B, that is problem identification. A hypothesis which can be tested is called, options are null, statistical, conceptual और theoretical. So जो hypothesis test किया जा सकता है, that is known as statistical hypothesis. A good hypothesis should be testable, complex, unverifiable or ambiguous. Correct answer is testable, क्योंकि एक अच्छा hypothesis वही होता है जिसे आप test कर सकते हैं. It should not be complex, unverifiable or ambiguous. Review of literature is done to, options हैं avoid duplication, waste time, increase volume और finalize the hypothesis. So जब भी review of literature किया जाता है in the research process, it is basically done to identify the gaps and to prevent any kind of duplication. So correct answer is option A, that is avoids duplication. इसके अलावा it helps you to identify the gaps also. It helps in refining the problems as well. Now some questions on scales of measurement. Pehla question from scales of measurement is, telephone numbers are measured on nominal, ordinal, interval or ratio scale. Correct answer is option A, that is nominal scale. और ऐसा क्यों है? क्योंकि numbers एक labels ही होते हैं, उनका कोई order नहीं है, कोई magnitude नहीं होता है. That is why telephone numbers are measured on nominal scale. Temperature in Celsius is, options हैं nominal, ordinal, interval और ratio. So जब हम बात करते हैं temperature की, Celsius में जब temperature हम measure करते हैं, it is an example of interval scale, because यहाँ पर you have equal intervals but no true 0 point. True 0 point नहीं होता है, but we have equal intervals. That is why it is a interval scale. Sales revenue is measured on, options हैं interval scale, ratio scale, ordinal scale और nominal scale.
करेक्ट आंसर यहाँ पर है रेशियो स्केल, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्स रेवेन्यू it has absolute zero and it allows meaningful ratios as well, so it is a ratio scale. Customer satisfaction scale, जहां पर let's say कि 1 is equal to very low, 5 is equal to very high, is options हैं ordinal, nominal, interval और ratio scale. Correct answer is option A, that is ordinal, because यहाँ पर बात हो रही है order of preference की. So ordinal will be correct answer here. Question number 35, mode is most suitable for, options हैं nominal data, interval data, ratio data और continuous data. Correct answer is nominal data, because mode हमें क्या बताता है, mode tells us the most frequent category. So it is best for nominal data. Now we will have some questions from data collection and analysis. प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड थ्रू, प्राइमरी डेटा आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं जर्नल्स, क्वेश्चनेयर, रिपोर्ट्स और बुक्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्वेश्चनेयर. प्राइमरी डेटा मींस फर्स्ट हैंड डेटा. सो आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर के थ्रू, सर्वे करके, ऑब्जर्वेशन करके आप प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. जबकि बाकी तीन, दैट इज जर्नल, रिपोर्ट्स एंड बुक्स, आर अ पार्ट, a source of secondary data, क्योंकि वो already collect किया जा चुका है, आप उसे फिर से reuse करेंगे, so it will not be a primary data, it will be known as secondary data. Secondary data is collected first hand, no. Already published, yes. Always inaccurate, no, it cannot be like always inaccurate. Collected through observation only, no. You can also collect secondary data without observation as well. So the correct option is ऑप्शन बी, दैट इज ऑलरेडी पब्लिश. सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है, फिर आप उसे यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा. और जो डेटा हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था. लिकर्ट स्केल इज यूज टू मेजर, ऑप्शंस आर फ्रीक्वेंसी, एटीट्यूड, रेशियो और ऑर्डिनल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एटीट्यूड. A variable that cannot be measured directly is, options are latent variable, independent variable, dependent variable और constant. So जो variable directly measure नहीं किया जा सकता है, it is known as latent variable. Pilot study is conducted to, options हैं finalize the report, test feasibility, collect final data और avoid biasness. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टेस्ट फीसिबिलिटी. पायलट स्टडी क्यों किया जाता है, इट इज डन टू टेस्ट द फीसिबिलिटी. ANOVA, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इज यूज्ड टू टेस्ट, ऑप्शंस हैं डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स, डिफरेंस अमंग मोर देन टू मीन्स, एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स और वेरिएंस ऑफ वन सैंपल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज डिफरेंस अमंग मोर देन टू मीन्स. If two variables move in the same direction, correlation is, अगर दोनों variable same direction में, that means if one is increasing, second is also increasing. If one is decreasing, second is also decreasing. अगर दोनों variable same direction में move करते हैं, correlation is said to be positive. Non-parametric tests are used when, options are data is not normally distributed, sample is very large, variance is equal or parametric test fail. Correct answer is option A, that is data is not normally distributed. In time series, secular trend refers to, options हैं short term fluctuations, long term movement, cyclical movement और irregular movement. Correct answer is option B, that is long term movement. The process of converting qualitative data into quantitative data or form is known as, options हैं editing, coding, tabulation और scaling. Correct answer is option B, that is coding. Now we have some mixed questions that come from all the topics that we have discussed अभी तक. Standard error decreases when, options are sample size increases, sample size decreases, variance analysis और none. So standard error कब decrease होता है, when the sample size increases. That means जब आप एक बड़ा sample use करते हैं from the universe, then standard error decreases. In regression, error term is assumed to have, options are constant variance, changing mean, autocorrelation or none of the above.
करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, दैट इज कांस्टेंट वेरिएंस. In hypothesis testing, power of test is, options are 1 minus alpha, 1 minus beta, alpha or beta. Correct answer is option B, that is 1 minus beta. Factor analysis is used for, options are data reduction, hypothesis testing, regression analysis or time series. Correct answer यहाँ पर है option A, that is data reduction. The method of studying one unit in detail is called, options हमारे पास हैं survey, case study, experiment और observation. So when you study one unit in detail, it is known as case study. So this was the last question for today's quiz, जहाँ पर हमने डिस्कस किए questions from statistics and research methods. बाकी यूनिट्स के questions भी, उनसे related MCQs भी चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं. उसी के साथ जून 2025 का question paper, solved paper is also available on the channel. You can go to the channel under UGC NET Commerce. You can find the video. And if you like the video, do subscribe. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow.